social sciences में one of the most important things to understand is that there are nuances and intricacies which are often missed in the discussions. Society, to start with, is not what it looks like superficially. इतना ही नहीं है. There is more to it that catches your eye in the beginning. In the beginning, it looks like a mere aggregation of individuals. Certain individuals, they have come together, society. Lekin it's not just that. So what does that mean? Okay, say for example, there are like 5 individuals or 4 individuals, 6 individuals. Sullkaak, Anis, Falak, Zishan, Sohail, and these have come together. So you would think that society is equal to Sul plus Shakir plus Anis plus Falak plus Zishan plus Sohail. But that's not true. Society is these plus many more things. And why is that? Because when individuals come together, they don't just bring their selves with them. They also bring with them values, for example. So they would add values. Otherwise, all societies would look like they would look same if it was mere aggregation of people. So they would add different values to the process of this social living society. And these are not values that concern them individually. If these were values that would concern them individually, then also we could have said society is equal to Sul plus Shakir plus Anis, because Sul is equal to Sul and all his values. But these are values that concern their living together. These values would not matter if they were living alone. For example, freedom of speech. Now this is a value which would make more sense only when you are living in a community. Akele mein it does not matter. Similarly, respect, tolerance, and all of these things, they wouldn't matter. Balancing of moral and material interests. Now this would also matter in a community. So then there are personal relationships that can also only take place when you are in a group. Say for example, marriage, love, affection, friendship. Now these are things जो individual में नहीं है. So if society was just equal to, say if I was alone, then society would be equal to soul. But society includes, say, marriage as well. Soul alone cannot marry. So society is more than just individuals taken together, and this is also often missed in the discussions. Now one of the things from a public servant's perspective, from a nation's perspective, from a government's perspective, administration's perspective, and also you yourself in your personal lives and also in discussions surrounding social sciences, one of the biggest challenge would be to prioritize among all of these values. We listed a few: freedom, equality, mutual respect, tolerance, progress, moral interests, material interests, love, affection, friendship. So your personal relationships also, public relationships also, and then these values. So there has to be some kind of an arrangement, because we would sometimes these are contradictory. Your moral interests tell you one thing, your material interests tell you the other. So how do you balance between the two? So it's very difficult to prioritize among these values, and that's the biggest challenge. And one of the things, the philosophers have come up with a lot of things to solve these problems. Prioritize कैसे करें? जैसे utilitarianism would be one of the answers. जो चीज़ maximize करती है happiness को for most of the people, do that. या फिर Kant का deontology. Or there would be hierarchy of values. You can establish a hierarchy of values, and you can like agree upon that and then work like that. So one of the इसको एक एग्जाम्पल से अगर हम समझे, जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटी में बड़ा इम्पॉर्टेंट है और हमारे सोशल डिस्कशंस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट वुड बी, इज़ ग्रोथ मोर इम्पॉर्टेंट और इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स मोर इम्पॉर्टेंट?
बिकॉज अगर आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखें ना, लॉट ऑफ ग्रोथ टेक्स प्लेस, वेरी फास्ट ग्रोथ, बट दैट includes within it inequality. So it increases inequality. So the gap between rich and poor keeps on increasing with growth. And then you want to redistribute. But when you start redistributing, growth suffers. So how do we prioritize between the two? What is more important? And that's where your meta commitments come in, actually. And we would realize that with time that it's actually meta commitments. R.M. Hare would say that it's a blick inside you, which makes you decide whether God exists or not, whether to be religious or not. And then also the is-ought fallacy teaches us how do we act, how do we take a decision that we have to act this way. That act cannot be derived from the reasoning we had behind it. Say for example, I reason, पूरा reasoning इस्तेमाल करके then I say कि okay, I will buy this cricket bat. But वही reasoning use करके मैं ये क्यों नहीं कह सकता okay, I would not buy this bat. So these things start getting trickier when you get into the nuances of it. So is growth more important than redistribution of wealth? What is more important? And you cannot take the view of either, because when you take that position, you see there are things on the other side that start getting hurt. अगर हम distributive justice पे insist करें कि ये ज़्यादा अच्छा है, जो कि एक easy way out हो गया है for our younger generation. And one of the reasons I believe that this is happening, कि younger generation is more getting towards it, is not because they thoroughly analyze it कि ये चीज़ सही है, इससे फ़ायदे होंगे. No, I think it's that iblisi construct inside us where we start blaming others. Now this kind of iblisi character जो आ चुका है काफ़ी सारे लोगों के अंदर, that someone else is the cause of my problems. So one of the reasons people fall on that side. Another aspect of it is ये easier way around है. मेहनत करने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें मिले और सिंपली मैं किसी और को ब्लेम करूँ एंड somehow through policy मैं वही चीज़ हासिल करूँ. So that's one more reason they do not want to do hard work. And then jealousy and envy. It's one of the things जो बहुत humans के अंदर embedded है, which makes people envious of what others have. So I think these are at the core of it. And because if you would analyze, if you take this position of distributive justice or equitable distribution, then what would you distribute? We have to ask this question, na? What would you distribute? For distributing something, you would need that something. So you want to redistribute wealth, you would have to create wealth. But we just talked about that once you start redistributing, wealth creation gets hampered. So to maximize wealth creation, we would have to fall into that system where we would have to emphasize on growth and then redistribute. So what we mean here is we would need to have those goods that we need to redistribute. So which is only possible once we start growing, only then. जैसे हमारे पास 4 ही सेब हैं और हम इनको redistribute करना चाहते हैं और हमारे पास population है 100 लोग की. It's very difficult. We would have to grow from 4 to 100. So but how is that possible? Turns out the best way to do that would be when you emphasize on growth. अगर more blunt terms में इसी को बोले, there needs to be a capitalist system for any socialism to take place. तो लेकिन अगर if we insist on growth only, then these inequalities increase and they also hamper growth in the longer run. So growth is not self-sustaining in the very long run. It creates to social anarchy. जैसे growth के लिए there has to be a system where you would be allowed to do that further.
लेकिन जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ती है, वी हैव सीन दैट इनइक्वालिटी के साथ साथ और भी चीज़ें बढ़ती है. से फॉर एग्जांपल क्राइम बढ़ता है. नाउ these are issues we have to deal with. You might say that these poor people are all criminals or whatever, but you want a solution to that problem. Even if the poor are criminals, whatever. तो जितने भी criminals हैं, say for example, even if we agree that all Muslims are terrorists, या all terrorists are Muslims, we have to deal with it ना. इसको solve करना पड़ेगा ना कि आप इसका क्या करें. ये तमाम मुसलमान टेररिस्ट है. वी हैव टू डील विद द प्रॉब्लम, राइट. वी नीड अ सोल्यूशन. एज सोशल साइंटिस्ट्स वी वांट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. इसको बोलने से आपने कोई बहुत ये एहसान नहीं कर दिया. सो टर्न्स आउट के रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़रूरी है सोशल इश्यूज़ को टैकल करने के लिए. एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ वाइज लीडर, राइट. वाइज पॉलिसी मेकिंग उसी को कहेंगे जिसको वो रेकनसाइल करे इन दोनों के बीच. एंड हम इन दोनों को मिसाल के तौर पे ले रहे हैं. यू कैन एक्सटेंड इट बियॉन्ड कि ये प्रायोरिटीज़ आपको भी देखनी है. जैसे आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और यहाँ से आपका दोस्त बीमार है, सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि क्या करूँ मैं, कि मैं दोस्त की तीमारदारी करूँ या मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करूँ. आप डेट्स पे जा रहे हैं, स्नूकर जा रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं और यहाँ से आपके 12वीं का एग्ज़ाम है. So you have to choose ना, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना. And these things we are faced in our personal lives as well. And wise people are able to do the right thing at the right time. That's what makes them wise. तो वो हम में से जो सोसाइटीज़ की स्टडी करते हैं, and we often indulge in it even if we do not know we are doing social sciences. जब हम कमेंट्री करते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, आपस में दोस्त बात कर रहे होते हैं, and then we are like there is too much litter, and then canine menace and all of the commentary we do. जब हम आपस में ही बात करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही, या क्राइम, या वो कल्चरल कमेंट्री हम सब करते रहते हैं. वी आर ऑल डूइंग सोशल साइंसेज एट दैट मोमेंट. बैड सोशल साइंसेज, येस, बट सोशल साइंसेज nonetheless. And those of us who do it or who actually study these societies, we should remember कि सोशल phenomena जो होते हैं, they almost always occur with these types of opposites working in tandem. And this is a very interesting insight. There would be that Apollonian spirit and the Dionysian spirit. Yin and yang. ये हमेशा ही होगा. The forces of good and the forces of bad. Similarly, the forces of growth and the forces of redistribution of wealth. The forces of taxes and the forces of subsidies. The forces of freedom of speech and the forces of restrictions on freedom of speech. तो ये तमाम चीज़ें होंगी हमेशा साथ में, और सोशल साइंटिस्ट इसको नेविगेट करना. एंड दैट्स व्हाई सोशल साइंसेस हैव अ हम्बलिंग इफेक्ट ऑन पीपल. It humbles them, because when you hear Karl Marx's case for socialism or communism, you really feel his fervor for social justice. Similarly, when you hear the criticism from the greats on the other side, you realize that no, they are also making sense, and then you get humbled in the process. And that's the beauty of learning well. अच्छे से किसी चीज़ को सीखना, वो उसका एक सिम्टम यही है. इफ़ यू आर लर्निंग इट, इट हम्बल्स यू. इसका एक हम्बलिंग इफेक्ट होता है. सो व्हेन यू लर्न दीज ऑपोजिट्स आर ऑलवेज देयर, एंड दैट शुड ऑल्सो टेल यू कि व्हाट इज फिजिकली अपेरेंट, दैट मीन्स जो ऑन इट्स सरफेस अपीयर्स टू बी ट्रू मे नॉट बी ऑन अ डीपर स्क्रूटनी. कितने इजीली, लाइक रिजर्वेशन के खिलाफ लोग बोलते हैं या फेवर में बोलते हैं, बड़े इजीली बोलते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ्स ऑफ व्हाई इट इज़ देयर एट ऑल. व्हाट आर द टू फोर्सेस ऑन द ऑपोजिट साइड्स जिसकी वजह से पीपल आर डिसएग्रीइंग और एग्रीइंग विद इट. तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल है द ग्लास इज फुल और द अदर पर्सन वुड से द ग्लास इज एम्प्टी. बट अ सोशल साइंटिस्ट वुड पॉज फॉर अ व्हाइल. And he would also indulge in a third element. Am I thirsty? It doesn't matter whether the glass is empty or full, whether it's half empty or half full. I'm not thirsty. And if I'm thirsty, does it matter whether it's half empty or half full? You'll just take it and drink it.
So that's the beauty of social sciences as a whole. There can be other examples that can be given. Take for example, a ship that proceeds in an ocean and it sees, say, an iceberg. Now, if the assumption is that it is an iceberg, there are more chances that the ship would reach the coast. But there can be an assumption that it's a flake of ice. That's all. Then this ship has more danger of ending up like Titanic. So you see these choices, two opposite choices, and their results can be anything. And the other day we were talking about, Falak was asking me that why have Muslims always been late to choose modern tech, etc. And I was explaining to him that how sometimes missing the bus is better because the bus that you missed fell in a gorge. So मुस्लिम्स इस मामले में जो लॉ मेकिंग रही है मुस्लिम्स की वो बड़ी ये मोहतात रही है. दे हैव ट्राई टू टेक द सेफर साइड. सो फिलोसॉफिकली जो उनकी मेटा कमिटमेंट्स रही है, वी शुड बी स्लो टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग अ सोशल चेंज बिकॉज वी डोंट नो व्हाट आर इट्स रिपरकशंस. सो मुस्लिम्स हैव बीन वेरी स्लो इन एक्सेप्टिंग मॉडर्न टेक, एंड आई थिंक दैट इज़ द राइट पोजिशन व्हेन इट कम, जब उसको हम कंपेयर करें उनके रिलीजन के साथ. And why are lot of young so restless about it? The thing that I just told you, one of the reasons is because they are जो उनका रुझान मटेरियल की तरफ ज़्यादा हो गया है दैन स्पिरिट की तरफ. हमारे जो मुस्लिम यंग भी है, they get sad that why is another nation on moon and Mars and why aren't we, and why are all of these things happening. वहाँ का टेक, वहाँ का साइंस, उन्होंने मार्च पे अभी कुछ दिन पहले देयर इज़ दिस पाकिस्तानी मौलवी, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एंड आई डोंट वांट टू नेम हिम, एंड हिज वायरल वीडियो वो मस्जिद में ही इज़ फ्राउनिंग अपॉन पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स कि तुमसे तो एक सुई भी नहीं बन सकती. एंड दैट्स ओके, नहीं बन सकती होगी जो भी वट एवर द केस इज़. I think one of the reasons for the Muslim youth का dismay यही है because they think that these are with which you measure आपकी success and all. So इसकी meta commitment वो realize नहीं करते कि Muslim scholars are highly reluctant. कोई भी चीज़ नई अगर कोई कहे तो वो reluctant ही होते, चाहे आप कितना भी उसके फ़ायदे बताएं. They would sleep on it rather than allow it. और इसमें टाइम लेता है, things take time for them to फाइनली, एंड व्हेन इट खुद से जब वो स्पॉन्टेनियसली सोसाइटी में होने लगता है एंड देन दे रियलाइज कि इट डिड नॉट हैव दोज रिपरकशन, देन दे स्टार्ट अलाउइंग इट. दिस इज इसमें दो मिसालें हम ले सकते हैं, एक लाउड स्पीकर्स की और प्रिंटिंग प्रेस की. दे वर नॉट वेरी क्विक टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस, बट व्हेन दे एक्सेप्टेड दीज, जब सोसाइटी में बावजूद उनके रिलक्टेंस के आ ही गई एंड देन दे सॉ के ओके फाइन इट्स वर्किंग, नाउ यू वुड सी दैट दे आर ओके विद इट. सोशल मीडिया पे आने पे यू वुड सी दैट मुस्लिम स्कॉलर्स हैव बीन वेरी रिलक्टेंट. बहुत धीरे धीरे आए, या मास मीडिया का इस्तेमाल करना बहुत धीरे धीरे आए, बट अब आ रहे हैं. यू सी दैट दे रियलाइज दिस इज द टर्फ वी हैव टू. सो मुस्लिम्स आर ऑलवेज लेट इन टू द बैटल, बट दैट्स व्हाट वन अस कदसिया. दैट्स व्हाट वन अस कदसिया. कदसिया में दे वुड कम लेट एंड द ऑपोजिशन वुड थिंक कि ओके देयर आर रीइंफोर्समेंट्स कमिंग. तो इकबाल हमेशा देर से आता है, दे वुड से. एंड देयर आर, जैसे वी सेड ना, ये हमेशा एक बार्गेन है, इसके नुकसानात हैं. दैट यू डोंट हैव अ कॉलोनी ऑन मार्स, ये उसका नुकसान है. यू डोंट हैव ग्रेट हेल्थ केयर एज इन द वेस्ट, तो इसके ये नुकसानात तो रहेंगे हमेशा. एंड दैट्स वेयर यू हैव टू स्ट्राइक द बार्गेन कि क्या करेंगे आप, क्या नहीं करेंगे. द असहाब ऑल्सो डिड इट when they had to compile Quran, and it wasn't put between two covers by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, though there are reports of that as well. Let's not get into those details, but to put it between the covers, was it written? Yes, it was written. The entire thing was written, that we know. But was it between two covers? There are more reasons to believe no. But there are evidences that there were mushafs that were complete as well. And then after the Battle of Yamama, they thought that we should compile it within and put it within the couple of covers, so that
if the Korra die, we would still have something to work with. But the other ashab, some of them, they were not comfortable with it. And then God opened their chest towards it, and then they went ahead with it. But the discussions continued. Many of this ashab continued the discussion further. Another example can be given कि अगर हम ऐसे ही मतलब without knowing के what it means to say something, एक social phenomena का जो description है उसकी nuance को भी नहीं समझेंगे तो बड़े बुरे नताइज निकलेंगे. Take for example, there is a river and its average depth is 5 feet. You are 5 feet 8 inch. Height आपकी 5 फुट 8 इंच है. So only an idiot would, based on this information, cross the river, try to cross the river. Why? Because 5 फुट एवरेज गहराई का मतलब ये नहीं हुआ कि ये कहीं पे 6 फुट नहीं है या ये 5 फुट से ऊपर कहीं पे नहीं है. एवरेज डेप्थ का मतलब हुआ कि ये कहीं पे 8 फीट भी हो सकता है, कहीं पे 2 फीट भी हो सकता है. एंड so this data does not tell you that you can cross the river. So data जो आपके साथ है उसको भी एनालाइज करना. कैसे एनालाइज करेंगे? Lot depends upon your own meta commitments. And then the classical example of the Jain epistemology, या फिर वही वो elephant and the blindfolded man. Someone says it's a wall, someone says it's a rope. So Jain epistemology पे repository में है lecture, so you people should listen to that. वो help करेगा. ये तमाम मिसालें जो हमने ली ना, they only show us कि सोसाइटी को स्टडी करना या किसी भी सोशल फेनोमेना को एनालाइज करना, इसमें सबसे पहले हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा देयर आर नुआंसेस टू इट. कि हमको ये मानना पड़ेगा कि सोशल रियलिटी जो है ये लेयर्ड है. देयर आर सेवरल लेयर्स टू इट. कि बस इतना ही कह दिया किसी को कि 5 फीट इसकी एवरेज गहराई है और वो निकल गया उसको क्रॉस करने के लिए, डूब के मर जाएगा. तो देयर इज मोर टू इट. या दुम को पकड़ के बोला कि ये रोप है, वो एलिफेंट है. सो द अपेरेंट नीड नॉट ऑलवेज बी रियल. और ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि टॉप विजिबल लेवल ये नीड नॉट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल. एंड दिस कैन नॉट बी एम्फेसाइज्ड मोर. ये जो सेकेंड वाला पॉइंट मैंने बोला, ये जो विजिबल लेयर है ये ज़रूरी नहीं कि ये सब ऐसा हो. लाइक टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स की जो विजिबल लेयर होती है, फ्रूट्स उसके टोटली ऑपोजिट होते हैं, द एडिबल पार्ट ऑफ इट. बनाना इनसाइड टोटली डिफरेंट, बाहर का छिलका टोटली डिफरेंट. वाटरमेलन टोटली डिफरेंट, मैंगो टोटली डिफरेंट. तो you see all of these fruits, they are good examples to notice that the superficial analysis would always be a bad analysis. You have to get into the nuances. अब देखिए, for example, based upon the social media experience, lot of people take decisions about कि society कैसी है. People are intolerant about so and so. ये 4 लोग on social media decide नहीं करेंगे society कितनी intolerant है. Society intolerant हो सकती है. हो सकता है सोसाइटी इंटॉलरेंट है एंड दैट ट्रांसलेट्स इनटू इंटॉलरेंस ऑन सोशल मीडिया एज वेल. दैट इज पॉसिबल, बट दिस हैज़ टू बी अदर वे राउंड. एपिस्टेमिकली पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि सोसाइटी इंटॉलरेंट है, फिर आप सोशल मीडिया की इंटॉलरेंस को एक्सप्लेन करें. दैट वर्क्स, दैट कैन बी ट्रू. बट टू सी सोशल मीडिया पे इंटॉलरेंस है, दैट मीन्स सोसाइटी में भी इंटॉलरेंस है. इट डजंट वर्क दैट वे. यू वुड हैव टू शो कि सोशल मीडिया का जो डेटा सेट है ये रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का. इसकी अंडरलाइंग एजम्पशन ये है. एंड इट नीड नॉट बी एवरी टाइम. ये ज़रूरी नहीं कि हर बारी हो. टेक फॉर एग्जांपल योर सोशल मीडिया एक्सपीरियंस. आप से चाइना से हैं, अजरबैजान से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहीं और मुल्क से, और आप हिंदुस्तानी आवाम के साथ बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्लब हाउस पे, ट्विटर स्पेसेस में. यू सी हाउ दे बिहेव एंड ऑल. And based on that you describe what your experience was like. But you have to know when you're talking to these people, this is a highly refined group जिनसे आप बात कर रहे हैं. एक छोटा सा ग्रुप है जिसके कुछ अपने कैरेक्टर्स हैं. To start with, 600 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं हिंदुस्तान में. हिंदुस्तान की आबादी लगभग 1400 मिलियन है. दैट मीन्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन से कम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं.
फिर वो स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोग उसमें से कितने सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन करते, सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, फिर इंटरेक्ट करते हैं, ये काफ़ी स्क्यू हो गया ऑलरेडी. एंड देन only 78% of households in India have a smartphone. This is households. कि घर में किसी एक के पास होगा तो household would be considered. And know that this number is only recent. ये बहुत recent है. There are two phenomena that worked in smartphone penetration in India. One is the geo phenomena. Rates internet की बहुत down हो गई and people started buying these smartphones so that they can access these facilities. And governments push on that JAM Trinity, Jandan Aadhaar Mobile Trinity. तो उस पे government का emphasis and all the financial inclusion etc. तो उसने भी बड़ा help किया. And the second thing that really worked was COVID. COVID में people were stuck to चार दीवारी के अंदर बंद हैं, and smartphones were their windows through which they would look at the world. बिकॉज हर एक चीज़ आप दीवारों के अंदर बंद है, तो द ओनली विंडो पीपल वुड हैव वाज इंटरनेट. तो इस वजह से उस टाइम बहुत. डू वी नो दैट दिस इज़ ट्रू? येस. टेक फॉर एग्जांपल झारखंड इज़ वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया. 2018 इज़ नॉट फार अवे, ये कल की बात है. 2018 में 17% हाउस होल्ड्स हैड स्मार्टफोन्स. फास्ट फॉरवर्ड 2022, 67% or something like that, 61%. From less than 20% to more than 60%. This is huge jump in smartphones. तो और ये recent का ही मैं डेटा आपको बता रहा हूँ. So your interaction with people on social media, once social media phenomena started, 2008 के बाद तो social media अच्छे से लोगों ने इस्तेमाल किया. 2008 से 2022 तक का आपका एक्सपीरियंस कितना स्क्यूड रहा होगा. आप देख रहे होंगे कि कितने टॉलरेंट थे लोग 2018 तक, एंड अचानक से 2018 के बाद ये ऐसे होने लगे. बट यू वुड नॉट हैव रियलाइज कि 2017 से पहले ये तो सोसाइटी ही पूरी इंटॉलरेंट है, क्योंकि 17 से पहले लोग थे ही नहीं ऑनलाइन, तो इसीलिए आपको इंटॉलरेंस नहीं दिख रहा था. या इट कैन बी अदर वे अराउंड, टोटली ऑपोजिट भी हो सकता है कि सोशल मीडिया एम्पलीफाई करता है प्रॉब्लम्स को. सो इट कैन बी द अदर वे अराउंड एज वेल. सो थिंग्स नीड टू बी, उनको एनालाइज करना पड़ेगा बहुत सारे लेवल्स पे टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. एंड सोशल मीडिया इज वन गुड वे ऑफ सीइंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. तो जब इन तमाम एस्पेक्ट्स और फेनोमेनास को वी टेक टुगेदर, वी रीच टुवर्ड्स द करेक्टर, more correct interpretation of the society. And who is the finest scholar? The finest scholar is who is the closest to the truth. And closest to truth would mean that he has analyzed the problem from the most number of perspectives and then come up with an explanation. We can take another example. Say Edmund Leach, British anthropologist हैं, थे 1990 के आसपास, रुखसत हो गए दुनिया से. फेमस, बहुत बड़ी हस्ती. एंड he would frown upon his fellow colleagues etc. and जिन्होंने क्या गलती की थी इनके हिसाब से while describing these tribes. So when they would describe tribes, these anthropologists, तो वो tribes का description कैसे देते थे? On what basis? कि what kind of dresses are they wearing, what kind of ornaments they are wearing, their living patterns etc. And he called such anthropologists as butterfly catchers. तितलियों के पीछे भाग रहे हैं ये. So why was he like this? Why is he criticizing them? क्या गलती कर दी उन्होंने? ठीक तो कर रहे हैं कि ये सोसाइटी ऐसे है. And this is also very important. Once we look at, say for example, the Muslim society. What are Muslims? Muslims are this. Bad analysis sometimes. What are Hindus? Hindus are this. This is what defines them. This is what they're doing. Anthropologists जिनको Edmund Leach कह रहे हैं, they are butterfly catchers. कि ये ठीक analysis है ही नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे उनके colorful dresses से नहीं लेना देना. Or whatever. Or he can be wrong, the other can be right. We have to decide on these meta commitments. कि हम describe ही कैसे करते हैं tribes को. So we know that tribals
हमारे स्टैंडर्ड्स पे दे आर डाउन ट्रॉडन पीपल, राइट. उनके जो प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग है, दे हैव नॉट ड्रॉन एज मच एज ऑफ अटेंशन एज आवर्स हैज. जो सिविलाइजेशंस के सेंट्रल प्लेसेस पे रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स दे बिकम सेंट्रल. तो कॉलोनियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का जो माइंड सेट था वो उससे उनको देखते थे. So their own problems, the tribals, what kind of struggles do their lives have, this was of no concern for the anthropologist. And this we see in their work as well. जब हम उनका वर्क पढ़ते हैं वहाँ हम देखते हैं कि जब वो अपनी सोसाइटी की एनालिसिस देते हैं, it's not in terms of colors of dresses or the ornaments they wear, but when they are describing tribals, they describe them from this perspective. So you see what happens when you do not look at all of, जब biases आ जाते हैं, आपके मेटा कमिटमेंट्स बीच में आ जाती हैं. And another aspect to it is कि सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करना ही खुद में पहले तो एक बड़ी परप्लेक्सिंग प्रॉब्लम है कि किस टर्म्स में डिस्क्राइब करें सोशल रियलिटी को. एंड वन ऑफ द रीजंस इज लाइफ इज हाईली कॉम्प्लेक्स. एक इंसान की जिंदगी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, एंड दैट्स व्हाई ऑटोबायोग्राफी सेल. व्हाई वुड ऑटोबायोग्राफी सेल? बिकॉज ह्यूमन लाइफ प्रेजेंट्स इतना ड्रामा, इतना स्पाइस, इतनी ब्यूटी एक लाइफ के अंदर होती है और इतनी डाइवर्सिटी होती है. अदरवाइज यू वुड रीड वन ऑटोबायोग्राफी, गॉन, खत्म, दूसरा क्यों लिखनी थी कोई बायोग्राफी किसी को. बट यू रीड बायोग्राफीज, यू वांट टू नो हाउ बैरक ओबामा लिव्ड, यू वांट टू नो हाउ बीटी वॉशिंगटन लिव्ड, you want to know all of these people, and that's why biographies sell as well. So there must be something happening with people's lives, na? Turns out highly complex. Every human being is layered, and then they come together. The permutations and combinations skyrocket all of a sudden, and that only means that routine living of people and societies is highly complex, and it's endlessly varied. And again, that should humble you. It should have such a humbling effect on you. Say for example, if there were only two modes in which Suhail can exist, and only two modes Falak can exist in, then Suhail and Falak together can exist in 4 different modes. So these numbers multiply, but we know Suhail can exist in hundreds of modes. He can be happy and satiated. He can be unhappy and fed in terms of food. He can be unhappy but filled stomach. He can be happy but filled stomach. He can be unhappy and less food, and then he can be unhappy and whatever the 4 are. I'm confusing. तो 4 कंडीशन तो यही होगी. ऐसे इस पे ऐड करते जाए. So there are millions of ways in which only Suhail can exist. And then Falak can exist in his millions of ways. Both of them together, how many permutations? Million into million. And then the society. Puri society. Millions multiplied by millions, multiplied by millions, multiplied by millions. It's huge. And that should have a humbling effect on you. And from this complex matrix, to pick one set of opinions or one analysis is not easy, and it's not even wise. And that's why, particularly when it comes to anthropology, history, sociology, you should read varied opinions. It's important that you do that. However, the sad part of the story is we still have to make choices. चॉइस तो लेनी करना तो ऐसा तो है नहीं कि खामोश रह सकते हैं, तो बार्गेन करना ही पड़ेगा. इसीलिए आपको अच्छा सोशल साइंटिस्ट होना आपका ज़रूरी है. कहने का मतलब हुआ कि एक तो हो गया यू गिव जजमेंट इन फेवर, एक हो गया यू गिव जजमेंट इन नेगेटिव, और यू सस्पेंड योर जजमेंट. द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट सस्पेंड जजमेंट. जजमेंट सस्पेंड हो नहीं सकती. फैसला तो लेना है. जैसे ये नहीं कहा जा सकता कि देखो ग्रोथ के भी अपने फ़ायदे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के भी अपने फ़ायदे हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, नुआंसेस हैं, ये हैं, तो इसीलिए क्या करें, कुछ भी नहीं, बस बैठे रहते हैं, जो हो रहा है होने दो. ऐसा नहीं है. पॉलिसी मेकर हैज़ टू मेक अ डिसीजन. सिमिलरली यू योरसेल्फ हैव टू मेक दीज डिसीजंस इन योर लाइव्स एंड इन सोशल कमेंट्रीज. दैट ओनली टेल्स यू it's very important for you to be a good social scientist, so that you are able to minimize the effect of this diversity.
So this discussion that we had till now in last half an hour, ये हमको बताता है कि आपके पास impartial और objective point of view होना चाहिए सोसाइटी को एनालाइज करने का. That much is settled by now in this discussion. तो इससे हमको इसी मिसाल को अगर देखें तो हम शायद ये बोलेंगे कि when we emphasize on distribution of benefits, we are not actually discouraging growth as well. हम ऐसा नहीं कर रहे. और the truth is in economics, growth and distribution both are equally important. और exclusive emphasis on growth इसी वजह से criticize होती है, and exclusive emphasis on the other thing, redistribution, उसको भी criticize किया जाता है. और similarly we can identify limitations in all studies of societies. ये तमाम चीज़ों में हो सकते हैं. Let's take a few examples again. Let's look at Indian freedom struggle to start with. बड़ा रिप्रेसिव कॉलोनियल रूल था हिंदुस्तान में, बहुत बुरा हाल था अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स. And few would have thought at that particular point of view whether Gandhian methods of achieving freedom would have gotten India freedom. Virtues like non-cooperation, non-violence, satyagrah, would these even work? And at that time, few would have been who would have thought that these ways work. But these worked. It did happen, and Britishers were overthrown. Were these the only factors? Of course not. There can be other factors that can be added up to it. That this happened, that happened, and those also added to it. But the core was this, and it kind of worked in the hindsight. Take another example. In 1960s, no one would have thought कि ईरान की जो 1960s and 70s कि पहलवी डायनास्टी which was ruling Iran would be overthrown. कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था. Everything was fine, hunky dory. But the mighty Shah of Iran was thrown out. He had to flee his country, and there was this Islamic revolution under Ayatollah Khomeini. The late 1970s में 1979 में probably हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, everything. No one would have predicted it before the revolution कि पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा. No one would have done it. But overthrow of autocratic regimes has taken place throughout history, right? ऐसा तो है नहीं कि हुई नहीं है, कभी होती आ रही है. But seldom have they been analyzed or predicted before they happened. कैसे होगा उसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट. एंड व्हाट मेड देम पॉसिबल, इसकी हाइंडसाइट में एनालिसिस तो हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही कि एक कौम बैठी हुई है और डिसाइड कर रही है कि अच्छा हमें ऑटोक्रेटिक रूल से आज़ादी चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है. ऐसे नहीं बैठी होती है कौन कि ये करेंगे एंड इट जस्ट हैपन्स. सोशल साइंटिस्ट बैठे नहीं होते कि डिसाइड कर रहे हैं कब ये बोर्ड रूम में कि हमको ये करना होगा. इट जस्ट हैपन्स. एंड देन the popular movements and democratic elections, for example, they need not give you the desired results as well. जो आपको लगता था ज़रूरी नहीं कि वो एंड हो. जो आपको ये क्या कहते हैं, ये वो सुबह तो नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि फिर ये वही सुबह हो जिसका आपको वादा किया गया था. After all, Hitler was democratically chosen. People loved him when he was chosen. पर कम 1930s, late 1930s, 1940s, ये वो सुबह तो नहीं the Germans are saying, जिसका वादा किया था हिटलर ने in the beginning. तो things can turn up like this. So you would see that इस example में हमको ये भी दिख रहा है कि thriving elections, great elections, ये नहीं है representative of a truly thriving democracy. And that's also one of the things people have to understand, because there are a lot of democracies right now in the world, and by excess of democracy they are losing democracy. In fact, elections of certain people in recent past across countries throughout the world, that has started to put up some good questions which we have to ask of democracy. कि इसके साथ कैसे डील करोगे, कि डेमोक्रेसी से तो हिटलर भी बन सकता है,
And there can be other examples that can be given from the contemporary world. And we are not unaware of how democracies have used money, muscle, mafia, etc. And they are democracies nonetheless. So therefore, in this example, a study of democracy has to take into account lot more than elections. सिर्फ महज elections हो रहे हैं हर 10 साल बाद या हर 5 साल बाद या whatever is the tenure of your parliament, etc. That is not in itself the end of the discussion, right? You would have to go beyond it. Genuine participation of people, for example. You would have to discuss how democracy is achieved as well. वो भी देखना पड़ेगा. So to sum up this discussion, what do we realize? We realize two things: that studying society is a highly nuanced phenomena. There are too many nuances to a society that need to be considered, and that's why only a thoroughly educated social scientist can make a good commentary and analysis of a society. That's the first thing we learn, that जब भी हमको कोई social commentary करनी है, it has to be highly nuanced and thoroughly investigated and rooted. The second thing we know now is the limitation of study itself. कि variables बहुत ज़्यादा हैं. तो every study would have its own bargains that it did. तो वो meta commitments पे depend करेगा कि किस चीज़ को इग्नोर किया, किस चीज़ को नज़रअंदाज किया और किस चीज़ को एक्सेप्ट किया उस एनालिसिस पे. हमको पता चला कि ये बार्गेन में यूजुअली देयर आर ऑपोजिट्स दैट आर वर्किंग एंड वी वुड हैव टू गिव अप ऑन वन टू गेट अनदर. हमको ये भी पता चला, जैसे डेमोक्रेसी का केस हमने लिया, कि महज इलेक्शंस नहीं है एनफ टू से इट्स अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी. दो इलेक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेसी. सो ऑन दैट नोट वी विल कंक्लूड दिस सेशन. We'll meet next time inshallah. If anyone has anything to say, add, subtract, so please do that.